Assalamu alaikum guys, this is Musaka FX and welcome back to another weekly analysis for gold. तो पिछले 3 वीक से हम विनिंग स्ट्रीक में हैं. वी आर विनिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन और कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एनीवन हु इज फॉलोइंग माय एनालिसिस क्लोजली. People are making a lot of money because gold is just in a one directional movement. We are avoiding sells and we are only going for the buys. Okay, now let's start. नेक्स्ट आने वाले वीक में गोल्ड का क्या मूवमेंट हो सकती है, क्या गोल्ड आपको यहां से नीचे की तरफ आता मिलेगा टुवर्ड्स दिस जोन, और gold gonna break this all time high. Okay, so let's see what happens. Okay, first of all, again I would always say that start from the fundamental analysis for gold. Okay, this is filtered as USD and medium to high impact news for the upcoming week from tomorrow. Okay, so 5:30 we have Empire State Manufacturing Index. Again हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है. आपको मार्केट में मंडे को ही बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी मिलेगी, तो हम भी इसको अपने ग्रुप में ट्रेड करेंगे. सेकंड 9 PM फेड चेयर पाउल स्पीक्स. अगेन न्यू ट्रेडर्स को मैं कहूँगा कि आप इसको ट्रेड ना करें. ओनली एक्सपीरियंस ट्रेडर हु आर फॉलोइंग मी फ्रॉम लाइक अ ईयर और 2 आर अलाउड टू ओके जस्ट ओपन ट्रेड्स. ओके, बिकॉज दिस कम्स अंडर गैम्बलिंग. फॉर न्यू ट्रेडर्स ये बहुत एक्सपीरियंस ट्रेडर्स की न्यूज़ है. ठीक है, अगेन फॉर जुलाई 16 वी हैव कोर रिटेल सेल्स एंड रिटेल सेल्स. अगेन डेटाबेस न्यूज़ है. अगर डेटा से फ़र्क आएगा तो आपको गोल्ड ऊपर को या नीचे को जाता मिलेगा. अगेन मैं आपको ग्रुप में इसका बाय एंड सेल का सिग्नल दे दूंगा. ओके, वेडनेसडे को हमारे पास कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है. ओके, वेडनेसडे विल बी लाइक टोटली टेक्निकल बेसिस एंड आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि अगर आप न्यू ट्रेडर हैं, कोई ऐसा पेयर चूज़ करें जिसपे आपको टेक्निकल ज़्यादा मिले, या कोई ऐसा दिन चूज़ करें ट्रेड करने का जिसपे आपको टेक्निकल मूवमेंट ज़्यादा मिले रादर देन फंडामेंटल मूवमेंट. ओके, एंड थर्सडे वी हैव वीकली अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स. अगेन इससे अगर आपको फर्क मिलेगा, आपको गोल्ड ऊपर या नीचे की तरफ जाता मिलेगा, मैं ग्रुप में सिग्नल दे दूंगा. फ्राइडे वी हैव नो हाई इम्पैक्ट न्यूज़. ओके, तो लाइक फंडामेंटल वाइज इट्स नॉट लाइक अ इम्पैक्टफुल वीक. ओके, 3-4 न्यूज़ है, हम उसको इंशाल्लाह आसानी से ट्रेड कर लेंगे. सो लेट्स मूव टू आवर टेक्निकल एनालिसिस. ओके, यहाँ पे हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं गोल्ड का from the viewpoint of the structure and the engulfing theory. Okay, again let's just take a look at the monthly again is going like crazy up. Okay, last month मैंने आपको बताया था क्लोजिंग के ऊपर because this close as a doji candle, तो आपको नेक्स्ट मूवमेंट बहुत बड़ी मिलेगी. आई थिंक यहाँ से कलेक्ट करेगा प्राइस को एंड गोल्ड कैन कम बैक डाउन. ओके, कम बैक डाउन टू कलेक्ट द लोअर प्राइसेस अगेन. तो ये आपको मार्केट ऊपर की तरफ जाती मिल रही है जस्ट टू कलेक्ट दिस प्राइसेस ऑन अ टेक्निकल बेस. अगर आप फंडामेंटल बेस करें तो आज जो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर आप कह लें कि जो कि फायरिंग हुई है, तो उसकी वजह से भी आपको काफ़ी वॉलेटिलिटी मिलेगी नेक्स्ट वीक के अंदर मार्केट में. सो वी विल हैव टू बी वेरी पेशेंट. लेट मी ओपन द न्यूज़ फॉर यू. Just let me go to the news section here. So this news shall impact the market. आपको मंडे मॉर्निंग में ही मार्केट में आपको बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, क्योंकि इस तरह की जो न्यूज़ होती है, क्योंकि इलेक्शन के पास इस तरह की न्यूज़ मार्केट के अंदर काफ़ी अनसर्टेनिटी पैदा करती है. तो आपको इस न्यूज़ को भी रादर देन मतलब आप टेक्निकल को फॉलो करें, आपने इस न्यूज़ को भी फॉलो करना है. ठीक है, बिकॉज दिस इज मेकिंग द हेडलाइंस ऑल ओवर द न्यूज़. ओके, so let's move to our technical analysis. Again after doji, gold is going up. Let me mark the higher zone price, this one. तो यहाँ पे हमारे पास मंथली के अंदर सिर्फ यही है. ठीक है, अगर आप मार्क करना चाहते हैं सो दिस वुड बी योर बुलिश इनगल्फिंग इन द मेकिंग. अगेन बनी नहीं है तो हम इसको मार्क नहीं करेंगे. लोअर वाली में मार्क नहीं करना चाहता. जब मार्केट इसके ऊपर आएगी तो हम इसको फिर देख लेंगे. अगेन वी हैव 2 zones here. ओके, वन इज अ हाई एंड वन इज अ लो जोन. ठीक है, सो लेट्स मूव टू आवर वीकली के अंदर you are getting 2 zones here. Again this engulfing buy which has been taken out by the market. आपको इस engulfing buy से रिस्पेक्ट मिल चुकी है on a weekly time frame. Let's do that. Okay, and there is this engulfing sell here. Okay, so what market is trying to do, अब मैं आपको बताता हूँ असल में हुआ क्या है. Let me do that and let me do that. So this is the respect from this engulfing sell. Okay, so this cancels out our sell. Okay,
अगेन अगर हमने सेल करना है वो विल बी वेरी केयरफुल, बिकॉज इस वीक ने यहाँ से लेके यहाँ तक की मूवमेंट ने आपको सारे का सारा सेल दे चुकी है। दैट्स वाई गोल्ड अब बाय की तरफ जा रहा है। अगर हम स्ट्रक्चर वाइज देखें, अगर मैं आपको लाइन चार्ट में दिखा दूं, सी व्हाट गोल्ड इज डूइंग, गोल्ड इज मेकिंग, वेयर इज द पाथ, देयर यू गो, हायर हाइज हायर लॉस। ओके, अनलेस और अनटिल आपको मंथली के अप के ऊपर, दिस वुड बी लाइक मंथली, आपको इस तरह के मूवमेंट मिले, ओके, हाई लोअर लो, लोअर हाई एंड लोअर लो, फिर ही हम सेल की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो ये भी काफ़ी डेंजरस होने वाला है न्यू ट्रेडर्स के लिए, तो हमने इसको बहुत बहुत केयरफुली ट्रेड करना है, बिकॉज गोल्ड इस टाइम बहुत हाई इंपैक्ट बाय के अंदर जा रहा है, तो वी विल अवॉइड सेल एट एनी कॉस्ट। ओके, सो व्हाट विल आई डू, आई वुड to precise, to eliminate this price point from this price point, and to find a zone like upper here on this zone, we're gonna have to go to a lower time frame and to find a buy, because this zone has always been like has already been taken out। ये वाला जोन भी आपका टेक आउट हो चुका है, तो हमारे पास इस टाइम हमने भी इसको भी लोअर टाइम फ्रेम में जाके इसको हमने शॉर्ट करना है। सो लेट्स मूव टू आवर लोअर टाइम फ्रेम विच इज आवर डेली। नाउ थिंग्स विल लुक लाइक मच क्लियर फॉर यू। This would be your daily, okay, all-time high and strong engulfing seller, and your buy is right around the corner. Here is your engulfing buy here. Okay, so two zones, one is sell and one is buy. Okay, मैं buy की तरफ again इसलिए हूँ, look at that, no lower low, see market is respecting the trend line, okay, and there is no lower low here, so buy. But in a sell zone, all time high, we need to be extra careful. Okay, and if you just want to be like very like careful, you can mark this engulfing buy as well. Okay, now let's move to our H4 time frame. Here you're gonna find a story just a little bit clearer. We have two zones here. One is this one, okay, and second is this one. Third is, if you want to mark it, is like this one. You're just gonna have to do that. Again, we will focus on the coloring rather than buy or sell. Buy पे हम like green रखें and red पे sell रखें, वो use one color, because जब आपने चार्ट को बर्ड आई व्यू में देखना है, so you should have your color coding ready. Okay, again this zone is very important. What market can do here, can do this one, okay, this movement, or if this breaks, then we shift our like focus to sells, because this is your daily, weekly and monthly, and you're gonna have a lower low here, like market makes a lower low and then does that, you're gonna find an head and shoulder pattern here, so we will focus our sales. Okay, but currently जो हमको market में नजर आ रहा है, we will trade only that. Now the next thing is, if we do that, so we have is this zone. Again आपके सामने है, मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर सकी, so this zone is still valid, but इसी zone के नीचे we have a huge engulfing buy, okay, like a huge engulfing buy, so this zone can be broken. आपको मार्केट रिट्रेसमेंट देती मिलेगी in the M15 zone of this engulfing buy and then boom. Okay, but market can go high and take this non-fresh engulfing sell here. Okay, multiple test है, but this is the all-time high price of the gold. Okay, again आपके सामने मार्केट की पिक्चर काफ़ी क्लियर नज़र आ रही है अब आपको, so what do we need to do, we need to go to retailers time frame. Okay, retailers box,
दिस वाज लाइक द स्विंग टाइम फ्रेम। अब आपको रिटेलर्स बॉक्स टाइम फ्रेम में जाना है, जहाँ पे हम अपनी एंट्रीज को प्रिसाइज करेंगे। अगेन क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसीजर है। वी हैव दिस engulfing buy, okay, but what I'm going to do is I'm not going to remove this one, but rather हम यहाँ पे नए zones को ऐड करेंगे। So this would be our fresh engulfing here. Okay, now what is here? Now this is a level like a very technical zone. So if we see that we have this engulfing buy here, which is fresh, okay, and this engulfing buy here is the failure of that engulfing sell. So what can we do here? We can expect the market to come back down to this level. That level can be mighty important, okay, 2404 to 2401, okay, market can come back, okay. अगर आपने ट्रेड लगानी है, if you want to open the trade, you can open the trade from that zone as well, 2406, and with a stop loss of 2398, okay, 80 pip stop loss, and you're gonna have a TP of like 2 to 300 pips in this zone, okay, because market is trying to collect the upper zones. Right now let's move to our lower time frame, and now I'm sorry, lower zone. Okay, now what is here? If this is a sell here, what we need to do here, we need to mark a sell entry around here. Why? Let me tell you something, because this is our last engulfing sell, and like there you go. Now this engulfing cell is the second top of this top, okay, so this is a double top method in the price action theory. What we need to do here, we need to mark a zone. If that zone breaks, then market is going to take the higher zones for sell. So it would be this one. This will be my zone, okay, and if market comes into this zone, like what I'm going to mark here is, I'm going to mark it here is M5 non-fresh engulfing sell. Now this can be your anchor zone. अगर आपको मार्केट यहाँ से ऊपर कौती मिलती है like that, and market does that here, okay, like a failed setup like this engulfing sell fails with two engulfing buys, you can go for a counter buy here to all the way up to this zone, okay. Now what I need to do here, buy till where, let's me do that. Now there you go. You would actually need to mark two zones here. Like this has been taken out twice, okay, this has been taken out twice, one is this one and second is this one, but again we are going to mark it as our TP1 from a buy below 15 non-fresh, okay. Now the second zone would be above here. Again this is the upper limit of the all-time high, so that zone will be mighty important for you, okay. आप इसको M15 फ्रेश मार्क कर सकते हैं, ठीक है, एंड द थर्ड जोन इज इन between here. Now what you need to do when there are multiple zones that are confusing you, you go to in between time frame, okay. इंट्राडे टाइम फ्रेम में हम देखते हैं कि engulfing कहाँ से आ रही है. So what we need to do here, we need to mark this M15, because that M15 would be from the H4, the H1 and the M15. The three time frame traders are involved in this singular movement, and that singular movement is a very strong movement because there is no bullish candle, all bearish candles, okay. And when market came back, market इसको टच नहीं कर सकी, seller ने यहाँ से market को नीचे push कर दिया, okay. So if this is your indication for sell, this is a mighty important zone
for sell. So what I would do here, I would go to M15 now, and I would mark it as the strong engulfing. Oh, I'm sorry about that. What is? It's acting weird, you know, trading view. Now that would be my zone. Because these sellers had the momentum to push the market down in a higher time frame. Okay, that. So this is your fresh engulfing sell here. And if you want to mark the last one, so it would be like the last one, and this will be the all-time high. So there you go. Now if you are trading in these zones, this zone would not matter in front of this zone and this zone. This zone is the H4, H1 and M15. Okay, and this zone is all-time high and the last engulfing cell that is holding the market up. If market comes here and if market puts a wick here, so we need to sell from this area. Okay, if this breaks, then gold can touch even higher prices, 2500 to 2600. Like it would be easy, because there is like no data. If I show you like in the monthly time frame, there is no data here. See, so gold can go like crazy here. Okay, it can touch like 2600, 2700, and then comes back for a retracement. Okay, so this would be my like analysis of gold for that week. Again, technical movement ज़्यादा रहेगी rather than fundamental. So I am like, जो मैं देख रहा हूँ मार्केट में, gold is gonna go up here and then we are gonna go enter in a selling spree. Okay, up until where, again this would be like at least weekly. Okay, the weekly is here. Okay, so gold, if gold starts selling from this price point, we will mark this area. Okay, we will look for that area for sell, like this one for our TP. So this would be like the ultimate trade, like ultimate 1000 pips trade that I am looking for. And if this breaks again, then it will be 1000 pips above. Okay, so if like a candle forms here, then we're gonna go for the Fibonacci levels. Okay, because Fibonacci will help us to, like, you know, go for like the TP and the selling point, because many traders will look for Fibonacci to go look for the sell zones here or the first TP here. Okay, we're gonna use Fibonacci here. So this was a detailed analysis of gold, and if you want to trade with me, if you want to earn like daily massive profits with me, I think recently put a video where I earned like $8,000 from a $1,000 account in 2 days. Okay, if you want to trade like that, and if you want to trade with me, if you want my mentorship, you can hit me up. My number is showing on the video, and it can be found in like the description of this video. So like, best of luck for this week. This week gonna be a very dangerous for small account traders. Be very careful, anything can happen in this area. Okay, this area will be the area of doom for new traders. Okay, so if you have the equity of $2,000, $3,000, and if you're trading on yourself, then only trade this area. But if you have smaller equity, if you want guidance, I'm here. Okay, just hit me up and I will just take you under my wing and make you the legendary trader that you have always wanted to be. Okay, this is Musaka FX signing out.